आईफोन नाम तो सुना होगा। आपको पता है जब भी कोई दोस्तों पहली बार आईफोन इस्तेमाल करता है और कुछ समय बाद इस्तेमाल करने के बाद उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। यस दोस्तों, जब आप दोस्तों पहली बार एक एंड्रॉयड से iOS यानी कि आईफोन में स्विच करोगे तो कुछ समय इस्तेमाल करने बाद शायद आपका भी यही रिएक्शन होगा। क्या आपको पता है कि आईफोन में दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आईफोन यूजर्स बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर्स ही नहीं है आईफोन में जिसकी वजह से लोग बाद में आईफोन लेके पछताते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वीडियो लास्ट तक देखो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। नंबर 1, इनकमिंग कॉल स्क्रीन। इस चीज़ के बारे में मैं यार क्या ही बोलूँ, मुझे सबसे मोस्ट इरिटेटिंग चीज़ आईफोन की ये इनकमिंग कॉल स्क्रीन लगती है। आपने दोस्तों इससे पहले एंड्रॉयड में आपको बहुत सारे कॉल आए होंगे और आपने नोटिस किया होगा कि एंड्रॉयड में जब भी आपके पास कोई कॉल आता है तो आप उस कॉलर स्क्रीन को ईजिली मिनिमाइज कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें यहाँ पर टास्क कर सकते हैं, जैसे कि ऐप्स ओपन करना, इंटरनेट यूज़ करना या फिर जो भी आप पहले से काम कर रहे थे वो चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन आईफोन में ये सिस्टम नहीं है। अगर दोस्तों आपको कोई कॉल करता है और आप अपने आईफोन में कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो भैया वो जो कॉलर स्क्रीन है वो मिनिमाइज ही नहीं होता। इसके लिए आपको या तो कॉल काटना पड़ेगा या फिर कॉल को रिसीव करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा। अब आप सोचो, आप अपने आईफोन पे कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, कोई मूवीज देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो और जिसका भी कॉल आया है उसकी कॉल को आप रिसीव नहीं करना चाहते, पिक नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी बार बार वो जो कॉलर ट्यून है जो स्क्रीन पे आया जा रहा है, स्क्रीन बजे जा रहा है और ऐसे में ऑब्वियस सी बात है आप इरिटेट हो जाओगे। और कुछ लोग तो भैया ऐसे होते हैं जो बार बार फोन रिसीव ना करने पे भी फिर भी लगातार कॉल करते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सोचो आप अपने फोन में कुछ जरूरी काम कर रहे हो, जरूरी चीजें देख रहे हो तो वो स्क्रीन ही मिनिमाइज ना हो तो सोचो कितना गुस्सा आएगा। दोस्तों सेम यही चीज आपको देखने को मिलेगा जब दोस्तों आप एक एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच होंगे। यस, और ये चीज सच बताओ ना, मुझे भी बहुत ही इरिटेटिंग लगती है। नंबर 2, कैसा हो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जो फोन लिया है 50,000 का, 1 लाख का या फिर 1.5 लाख का, आप दोस्तों उस स्मार्टफोन में इंटरनेट से ना कोई गाना डाउनलोड कर सकते हैं और ना ही कोई वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, तो आप बोलोगे हैं इतने सारे पैसे दे रहा हूं यार फिर भी मैं ये चीज नहीं कर सकता। यस दोस्तों, जो फ्रीडम दोस्तों आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मिलता है, आप एंड्रॉयड में इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पे जाके, डाउनलोडिंग वेबसाइट पे जाके कुछ भी फोटोज, वीडियोस, मूवीज वगैरह को ईजिली यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप iOS यूज करते हो तो दोस्तों iOS में आप भले ही कोई सा भी ब्राउजर इस्तेमाल कर लो, वहां पर दोस्तों आप इंटरनेट से किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से यहाँ पर किसी भी तरह के यहाँ पर म्यूजिक या फिर वीडियोज या फिर मूवीज को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो अपने गैलरी में, नहीं कर सकते। अब दोस्तों आईफोन में म्यूजिक सुनने के लिए एप्पल अपना खुद का एक म्यूजिक ऐप देता है जिसके अंदर दोस्तों अगर आपको कोई गाना सुनना है, कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि पेड सर्विस आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप बाहर से, आपको कोई फेवरेट म्यूजिक आपने बाहर से डाउनलोड कर लिया, कोई मूवीज हो गया, वीडियोस हो गया, अगर आप उसे डाउनलोड करके अपने म्यूजिक के प्लेयर लिस्ट में या फिर कह लो प्लेयर में डालना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते। यस, इसके लिए दोस्तों आपको अलग से पहले अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप सिस्टम में iTunes सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर बाहर से आपको किसी वेबसाइट से आपको सॉन्ग्स डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उस iTunes सॉफ्टवेयर की मदद से आपको अपने आईफोन में सॉन्ग्स को ऐड करना पड़ेगा, तभी आपके म्यूजिक में वो जो सॉन्ग्स है वो शो होंगे। सोचो एक नॉर्मल यूजर है जिसे जो इतना ज़्यादा टेक सेवी नहीं है, अगर वो पहली बार एंड्रॉयड से आईफोन में यानी कि iOS में स्विच हो रहा है तो वो सब ये कैसे कर सकता है? फिर वो बोलता है यार गाना कैसे डाउनलोड करे, मूवीज डाउनलोड करना वो कैसे करे, वीडियोस डाउनलोड करना मुझे इंटरनेट से वो कैसे करे। तो भैया ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब आप एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच करते हो तो ये चीज़ आपको झेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट, कस्टमाइज यूआई। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो, आप गीक हो, तो आपने ज़रूर अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में तरह तरह के दोस्तों यूआई को चेंज करा होगा, तरह तरह के यहाँ पर आपने लॉन्चर इस्तेमाल किए होंगे, कस्टमाइज़ किया होगा यहाँ पर अपने मेन्यू को, होम स्क्रीन को। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने आईफोन में ये चीज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी, आपको जो एप्पल दोस्तों यहाँ पर अपना यूआई प्रोवाइड कर रहा है वही आपको हमेशा के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सोचो कितना इरिटेटिंग है। यस, अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आपको पता होगा कि जो एप्पल है अपने आईफोन में सदियों से सेम यूआई का ही इस्तेमाल करता है। कितने ही iOS आ गए, वर्जन अपग्रेड हो गए, लेकिन दोस्तों जो यूआई है वो सेम का सेम ही है। चलो सेम तो है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन
बुरी बात भी यह है कि दोस्तों अगर हम इसके यूआई को चेंज करना चाहें, बदलना चाहें, कोई लॉन्चर ऐड करना चाहें, सिंपल में कहूं तो दोस्तों जिस तरह से आप एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन को कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर अपने मेन्यू को, यूआई को चेंज करके अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, वैसी चीज आप यहाँ पर iOS में यानी कि आईफोन में बिल्कुल नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज आता है मेमोरी कार्ड। आप सभी लोगों को पता है कि एंड्रॉयड में दोस्तों आपको मेमोरी को यानी कि अपने इंटरनल स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए अलग से डेडिकेटेड एसडी कार्ड का सपोर्ट भी मिल जाता है, मतलब एसडी कार्ड के लिए एक सपोर्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों आपने आईफोन देखा होगा, आईफोन के किसी भी मॉडल में आपको किसी भी तरह के मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब उसमें आपको जो फिक्स एक इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट दिया जाता है, सेम उतने ही साइज को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ना आप उसे एक्सपेंड कर सकते हो। यस, नेक्स्ट है चार्जर। आप सभी लोगों को दोस्तों पता होगा, जब भी आपको एक नया आईफोन खरीदते हो तो आईफोन में दोस्तों आपको जो चार्जर मिलता है वो बहुत स्लो होता है। यस, और आपको अलग से दोस्तों अलग से कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके यहाँ पर आईफोन के लिए फास्ट चार्जर खरीदना पड़ता है। मतलब आप आईफोन के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अलग से चार्जर के लिए भी पे करना पड़ता है। खैर ये तो छोड़ो दोस्तों, यहाँ पर आईफोन में दोस्तों सिर्फ आईफोन का चार्जर ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसी दूसरे कंपनी या फिर कह लो दूसरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन के चार्जर को आप इस्तेमाल करना चाहो तो नहीं कर सकते। जिस तरह से दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो और आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव के घर पे जाते हो तो आप नॉर्मली उनका चार्जर भी इजीली अपने फ़ोन में इस्तेमाल कर लेते हो और अपने फ़ोन को चार्ज कर लेते हो। लेकिन आईफोन में ऐसा सिस्टम नहीं है। आईफोन में सिर्फ आईफोन का ही चार्जर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। किसी दूसरे कंपनी का या फिर कह लो किसी दूसरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन ब्रांड के चार्जर अगर आप यूज करना चाहो तो नहीं कर सकते। एप्स डाउनलोड। आपने देखा होगा एंड्रॉयड में दोस्तों आप कहीं से भी इंटरनेट से किसी भी थर्ड पार्टी एप्स, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके आप एपीके डाउनलोड करके सिंपली अपने फोन में एंड्रॉयड ऐप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐसे फ्री के एप्लीकेशन मिल जाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करते हैं iOS की यानी कि आईफोन में, तो आईफोन में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप एप्लीकेशन को यानी कि ऐप्स को ऐप स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों आपको ऐप स्टोर में जितने भी मोस्टली एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे पेड होते हैं, मतलब जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए ऑफकोर्स आपको पैसे देने होंगे। मतलब मोस्टली अगर आप एंड्रॉयड से कंपेयर करते हो तो एंड्रॉयड में आपको बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन आपको फ्री मिलते हैं, कुछ फ्री सर्विस भी मिलते हैं। बट अगर आपको ऐप स्टोर में दोस्तों कोई फ्री सर्विस इस्तेमाल करना है तो उसके लिए पहले आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इतना झंझट है और ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। मतलब आपने एक फ़ोन के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए पे करा, लेकिन फिर भी आप इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। It's been 11 years since the very first iPhone has launched, and the iPhone has improved tremendously over that time. However, there are a few things that still bother me that just sort of don't really make sense. The cables. Let's start with the cables. The new iPhones come with Lightning charging cables. Now, the weird thing is, only the iPhone and iPad use the Lightning cable. It doesn't work with anything else. Whereas, for example, a USB-C cable, that works with a lot of things. And the other weird thing is, the USB cable doesn't plug into the new MacBook Pros. I have an iPhone, and out of the box, I cannot plug it in to the new MacBook Pros. To me, this is absolutely nuts. It's mind-boggling. Okay, this is an old one by now. The iPhones do not have a headphone jack. To be fair, not all the Android phones have headphone jacks. Looking at you, Google, and your Pixel 2s. Say you got wired headphones, what do? Well, you use the dongle, right? Okay, so dongle. You lose the dongle, you gotta buy the dongle again. Say you wanted to charge your phone while also listening to music. Also not possible, right? Unless you got Bluetooth headphones, but if you have wired headphones, you can't charge your iPhone and listen to music at the same time. You gotta buy another type of dongle, some sort of adapter. That's just not a great experience, right? Let's talk about fast charging. Finally, wow, it came with the iPhone, finally. Thing is though, if you want fast charging with the iPhone, you gotta go out and buy more stuff. You gotta buy a whole new cable, at the very least. And then you gotta buy a special kind of brick. Extra costs, extra things, more wires, more cables. Meanwhile, the cheapest of cheap Android smartphones come with some kind of fast charging. The Moto G6, for example, $250 smartphone. It comes included with a fast charging brick. You know, it's not really consumer friendly when you offer a feature, but it also involves buying lots of other things for using that feature.
Let's move on to iOS for a little bit, and I want to talk about default apps and your choice, basically. What kind of choice you have as an iOS user. Let's take email, for example. So you click the email link, and it takes you to Mail, even though you have Gmail, and that's your preferred email app. When someone sends you, say, a link to a website, and you tap it, your iPhone will take you to Safari, even if you prefer using Chrome. I feel like I should be able to set whatever app I like for emails or anything. Something that a lot of Apple people say, complain about with Android phones, is it comes with all this bloatware, all the apps, and too many apps, and all that stuff. To a certain extent, that's true on certain phones, absolutely. But hey, you know what? Actually, the iPhone has a bunch of apps too that you can consider bloatware. The Watch app, the TV app is there, the Home app. What if you don't have a smart home? I mean, there's a lot of bloatware here, right? This is bloatware. Keynote. When are you going to do a presentation on your phone? Android is just more efficient with the way you use it. It's just smarter, it's just like a better design. Say I want to go into the Bluetooth settings, change something, switch to a new device, pair the new device. I have to go into the settings app, gotta find Bluetooth here, and finally eventually get to Bluetooth. But with Android, it's a quick swipe down and hard tap on the Bluetooth icon, and you're there. It's not hard. I'm not saying this is like some crazy, terribly designed user interface. It's just harder than Android. Our friends are super stoked at picking up a new iPhone, but no matter how many times you explain how much better Android is over iOS, all the Apple fanboys look at you like you're insane. Well, you know it's true, but perhaps they just need a WatchMojo top 10 list of all the reasons why Android reigns supreme. Hey everyone, welcome to Gear Up, the WatchMojo series that looks at the latest in gadgets, gear, and games. I'm Mark Saltzman, and in this video, we're going to look at 10 ways the Android operating system trumps Apple's iOS. Oh, and feel free to share this video with all of those iSheep out there to help drive the point home. Before we begin, we publish new videos every day, so be sure to subscribe for more great content. Alright, not listed in any particular order. Number 1, customization. How nice of Apple to limit you on what you can do with how your iPhone screen looks and operates. No widgets or live wallpaper. You can't remove some apps. And Apple tells you which mail, contacts, and calendar you should be using. And Safari, compared to Chrome, forget about it. Oh, and so nice that when you plug your iPhone into your car, Apple CarPlay won't let you use Google Maps or Waze, only Apple Maps, an inferior product. While pretty, iOS is limiting and linear, with very few ways to customize the experience like Android offers. Number 2, Google Assistant. Siri may have been the first, but she's showing her age. Siri has lost a lot of her luster over the years compared to other personal assistants. Hey Siri, read my schedule. And I'm the guy who wrote the book Siri for Dummies. Google Assistant, on the other hand, is a lot smarter of an AI companion and is also predictive instead of reactive, meaning, with your permission, you can have Google tell you about things you may want to know before it happens, like detecting traffic on your way to work before you leave home with a suggestion to leave earlier or take another route. Number 3, more apps. When it comes to apps, Apple's walled garden approach may be more desirable than Android's wild, wild west, since Apple tries to weed out the bad apples for you. But Google Play has come a long way over the years. In fact, you've got access to more apps than App Store, with more than 2.5 million apps at Google Play, compared to about 2 million at the App Store. And 2.3 million apps out of the 2.5 are free on Google Play, which is 92% of them, a much higher percentage than the number of free iOS apps. Number 4, with Android you can download wherever you want. Surprise, surprise, but Apple doesn't trust you to download iPhone apps outside of the App Store. That's like telling you can only buy your groceries from one supermarket. Well, Android, on the other hand, lets you download from other places than Google Play, such as other app stores, websites, even BitTorrent sites, and more. You may have to enable your Android device to allow this, but it's easy enough to pull off. Number 5 reason why Android is better than iOS: no iTunes. iPhone users must use iTunes, bloated, complicated, and restrictive software to transfer music between your iPhone and a computer. Oh, and that's only one way, by the way. You can't copy music from an iPhone to a computer for safekeeping, only the other way around to help reduce piracy, presumably. And you can only sync your iPhone to one computer. Uninstalling iTunes off a computer can be a headache too.
Android, on the other hand, doesn't require iTunes, and you've got many more choices in both downloadable and streaming music services. Same goes for other media like TV shows and music, games, books, and more. Number 6, multitasking. On an iPhone, multitasking merely means you can listen to music while browsing the web. Whoopee. With an Android phone, though, you can truly multitask by having 2 apps open at the same time. For example, I often snap a video onto the top half of my Android screen, while on the bottom I have email open, or a web browser, a notepad, or something else. As I said earlier, iOS is more of a linear experience on iPhone to perform one thing at a time, while Android lets you mix and match to truly experience 2 apps at once. I've never felt power like this before. Number 7, removable storage. iPhone and iPad don't let you add a micro SD card, therefore whatever storage you commit to when you buy the iOS device is all you'll ever have. With most Android phones, you can pop in an inexpensive memory card into the side or back of the device to expand storage considerably. Yes, streaming services like Spotify and Netflix, as well as cloud storage services, does mean that we're not downloading as much these days, but ask anyone who owns an iPhone and you'll probably hear stories about running out of storage until you delete some items off your device to make room. On a related note, many Android phones offer a dual SIM tray, so you can keep 2 phone numbers on the same phone, ideal for having 2 lines, maybe one for work and one for play, or while renting a SIM in another country. Number 8, where's the headphone jack? Apple EarPods are the most popular headphones in the world. And with iPhone 7 and 7 Plus, we're moving to connecting them over Lightning. Speaking of missing a key hardware feature, most Android phones have a headphone jack, so you're not forced to go wireless, meaning you must keep your earbuds charged or you can't hear your music, and you don't need a dongle to plug wired headphones into the Lightning connector like Apple makes you do with iPhone. And what if you're using the adapter to listen to wired earbuds and you want to charge up your iPhone at the same time? Well, you're out of luck, unless you've got one of the new iPhones with wireless charging. Many Android phones have had wireless charging and a waterproof body for years, but Apple is finally catching up years later. Good for them. Number 9, device selection. Another reason why Android is better than iOS? You've got literally thousands of Android devices to choose from, ranging in price, brand, size, feature set, and more. With iPhone, there's only a couple of options available, all from the same company and priced at a premium. By going with Android, you've got a ton of choice out there, so you're not limited in what you can buy. Want a ruggedized Android phone for working in harsh environments? No worries. Prefer a smartphone with a stylus pen tucked into the back? Sure thing. How about an Android phone with an integrated thermal camera? You bet. And an Android phone with a removable battery? Okay, so you get the idea. And number 10, Android is integrated with your favorite apps. Because Android is owned by Google, all of the services that you know and love are pre-installed and ready for your sign-in, whether it's Gmail, Google Calendar, Google Maps, YouTube, Google Docs, Music, Chrome, Drive, and more. These are likely the services you're using anyway, so it's convenient they're all pre-installed and ready for your single login. But should you want to use another mail program or browser or what have you, you can easily do it. On a related note, Android offers more cloud storage. Google Drive offers a full 15 gigabytes of cloud storage, while iCloud only gives 5 gigs for free, hardly enough for all your photos and videos. And if you want to upgrade your cloud storage, Apple charges more than Google does.